Almost 60. Almost 60. 60. Okay. It's exactly 60. It's just 61 now. Okay. Okay. You're expecting around about 60 or more than 60? I think, ma'am, they will be much more than this 60. They will join. Yeah, they will join. Okay. Let us start, sir. Yes. Very good afternoon to everybody and madam also. Before starting the program, this program or this workshop is basically arranged by the IIC Institution Innovations Council of Greater Kolkata College of Engineering and Management, West Bengal, in association with the Mechanical Engineering, on the topic of the entrepreneurship skill, attitude, behavior development. So before starting the program, just introduce myself. Myself is Arindam Sadhu. Basically, I am assistant professor in the Electronics and Communications department. And today it is my immense pleasure that I'm going to introduce our eminent speaker, Dr. Archana Bhatia madam. Presently, madam is working as an associate professor and head of the commerce department, DAV Centenary College. Madam is also the chief coordinator of the SFS courses of the specific of the college. Madam completed her MCOM from the MD University Rohtak in 1986, and after that, with that one, she is also the gold medalist on the MCOM. Then she completed her MPhil in Business Economics, University of Delhi, in the year of 1995, and madam awarded her PhD in the year of 2013 from MD University Rohtak. Madam has almost 100 research paper, including the international journal, conferences, and also madam write almost more than 10 books basically. Madam guided 6 PhD candidates to complete their PhD degree. Lots of different awards is also given to ma'am, but lastly, in the year of the 2021, madam got the best academician award from the Cognizance Academia, registered under the government of India. And madam is also the member of the different other administrative responsibilities, and she is also the member of the Internal Complaints Committee, Kendriya Vidyalaya, Faridabad, member of the Ethical Committee, ESIC Medical College, member of Internal Complaint Committee, and member Research Advisory Committee at MDU Rohtak, member of Board of Studies of MIRU. So now, without wasting too much time from my side, I am heartily welcome you, ma'am, in this program. Ma'am, over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir, for my really very nice introduction. Greater Kolkata College of Engineering and Management, the Innovation Cell, in collaboration with the Department of Mechanical Engineering, has organized this workshop. So without wasting any time, I think I should start. This is the first slide of mine, my name, my qualification. I think we can now go to the second one. Next. Next slide, sir. Yeah, these are a few slides which show my achievement. I made 6 times India and Asia Book of Records in my field, that is statistics. Next. Next, sir. Next. One of my book, Wo Asma Mujhe Do, that was being inaugurated by, at that time, Justice and Law Cabinet Rank Minister, Ravi Shankar Prasad ji. Next. Next slide, sir. Yeah. First of all, I would like to start today's lecture by pinpointing few of the very important guidelines to the students basically,
I think it is more important to understand subject not intellectually, but from core of your heart. And the main purpose of this particular lecture is to create a spark among the students and to enlighten the student regarding this particular scenario of today's, that what is entrepreneurship, what are the differences. I'll give you very good examples also. And one thing is there, one couplet is there, भगवान ने बनाया है हीरा हर किसी को, ऊपर वाले की कृति तो एक सी है क्रिएशन। भगवान ने बनाया है हीरा हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, a simple meaning of entrepreneurship. If I have to define entrepreneurship, it is basically a mixture of a blend of three things. You should be a good innovator. आपका creative bent of mind होना चाहिए. You should be able to take risk. When I said risk, it means calculated risk, rational risk. And thirdly, you should be skilled. So if you are a good innovator, you are having a good creative bent of mind, you are curious, you are equipped with the very good skills, some innate qualities and some acquirable qualities, and you know how you can create a difference among masses, how you can going to contribute to the society, I think you can become a good entrepreneur. Now the next slide. Next. These are the 3 E's of entrepreneurship: enterprise, ecosystem, and economies. Next slide. Now let us talk about all these 3, that is enterprise, ecosystem, and economies, in little bit of detail. When we talk about the enterprise, it is a combination of 3 I's. When we talk about the ecosystem, it is a combination of 3 P's. And when we talk about economies, it is a combination of 3 C's. Enterprise means some idea should be there. Then you need to implement that idea and innovate. Ecosystem is a composition of the policy. Policy means the country in which you are living. The policy is framed by the government, which is uncontrollable variable also, either for a businessman or for an entrepreneur. Then people are very important, because human aspect is always associated, maybe in the form of a customer, maybe in the form of your manpower as employees. Then prevalent technologies. You should be open up to the new techniques, to the new technology. You should have flexibility enough to adapt to the changes. Then comes economies. That leads to the production at the minimum cost. How you're going to face the competition, because there is a lot of competition in the market. How you're going to compete with that competition. Then commercialization. Next slide, sir. Next slide, sir. Now we can know the difference between a businessman and an entrepreneur. Then I'm going to give you a few examples that who is a businessman, who is an entrepreneur. A businessman is a person who creates business in the old market. An entrepreneur is a person who is having a new idea, who creates new or modify the existing one. He can have a new idea also, he can modify existing one also. In case of entrepreneurship, the component of risk is high because the idea is new, but the competition is less being faced by him. And basically, entrepreneur focuses more on the people. His approach is to give some benefits of comforts to the people, whereas as far as businessman is concerned, his main focus is only on the profit motive. And always remember one thing. In life, in whichever profession you are, it hardly makes any difference whether you are making huge profits or you are making less profits. A businessman or an entrepreneur can have a very good profits in the long run if and only if he fulfills his social responsibilities. There is one saying, why to chase money unlimited when the life is so limited?
तो जो पैसा है उसका महत्व वहीं तक है, इंपॉर्टेंस वहीं तक है जहां तक आप उसको समझते हैं. For sustenance of a business, for sustenance of a entrepreneurship idea, you need money, no doubt about it. Without money also you cannot sustain. But if your goal is only profit, if your goal is only profit motive, then it is a business, it is not entrepreneurship. Next slide, sir. Now there are a few examples. So next, now Mukesh Ambani, he is a businessman. Generally, the businessmen are the people who are the old players in the market, established. They work on the old ideas. For example, Jio, BSNL, these are the old players. When we talk about the entrepreneurship, you can see who has made Oyo, Uber, Ola. Uber and Ola, they don't possess even a single taxi, but again, they are having so much huge network, only a creative idea, creative bent of mind, out of which they were able to establish such a huge empire. Next, sir. Now, let us try to understand the difference between employee versus entrepreneur. बेटा आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करें, जैसे मैं हूं, मैंने पूरी जिंदगी जॉब की है, नौकरी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. मैं एक एम्प्लॉई हूं, लेकिन एम्प्लॉई की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एम्प्लॉइज में भी कुछ डिफरेंशिएशन होता है. एम्प्लॉइज में ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जिनके काम करने की स्पीड स्लो होती है. दे आर अवेलेबल ओनली टाइम टू टाइम. यू से कि सर मेरा टाइम 9 से 5 का है, 5 बजे के बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रुक सकता. They are satisfied with the fixed pay. They are drawing a salary of 1 lakh per month. It's okay. They are self-centered. मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं. हार्ड वर्क तो करता है एम्प्लॉय, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करता. लेकिन अगर हम एम्प्लॉय के कंपैरिजन में एंटरप्रेन्योर को देखें, तो ही इज मोर पॉजिटिव. He focuses on variable pay. He plans for his dreams and he does the smart work. So he's paid for value he creates. If suppose in organization we are having more of entrepreneur than the employees, that creates a very good working environment. You are having a committed team. You are having a motivated people, because motivation, if it is self-motivated, then only it works. With the external factor motivation, it doesn't work for a longer time. So next. Now there is basically one thing you should try to understand, being the youth of India. So next slide. India is having a very strong young demograph. India is having a very strong young demograph. We are one of the countries in the whole world where a large proportion of our population falls into the age group of 28 to 35 years. But there is a problem of unemployment in our country. Besides that, the mindset of the people, maybe in the form of parents, maybe in the form of students or the society, people are not aware of the good avenues of entrepreneurship being opening in the society. If you are seeking a job, obviously unemployment rate will increase because there are not so many jobs in the market. But if you are having a good creative bent of mind, you are exploring some good ideas, you are able to give employment to so many people, this means you are a job provider. So the today's need of ours is that our youth should focus basically on providing the jobs. One more thing is there. A way back, International Labour Organization had one case study in India related with the women issues in state of Uttar Pradesh, कि औरतें अपने वर्क एनवायरनमेंट से क्यों फ्रस्ट्रेट होकर पार्टिसिपेशन के जोन से बाहर आ जाती हैं. दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स. तो उसमें रिसर्चर ने कहा कि इंडिया में एक प्रॉब्लम तो अब्यूज की है ही है, बिकॉज वुमेन इज वेरी मच सप्रेस्ड. दूसरी चीज उसने कहा कि जो कॉमन सेंस है,
that lacks in the women of Asian countries. Kabhi bhi formal degree, suppose I am a gold medalist, that does not assure that I am very intelligent, I am very rational, I am very open, I am very flexible, I can handle every situation. The formal degree versus your common sense, your open-mindedness, these two things are not synonymous. No doubt, आप जो भी पढ़ते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप डॉक्टरेट करते हैं, इससे आपकी मेंटल फैकल्टीज डेवलप तो होती हैं, लेकिन फिर हम ये मानकर चलें कि एक अनएजुकेटेड बंदा, एक कम पढ़ा लिखा बंदा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे दे आर नॉट हैविंग फॉर्मल डिग्री, कोई आईएम स्कूल से नहीं पढ़े हुए, उन्होंने कोई मार्केट रिसर्च नहीं पढ़ी, कस्टमर बिहेवियर नहीं पढ़ा, देन ऑल्सो दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ in spite of holding any kind of managerial degree. So main thing is how much you put in, how much you are using your brain, how much you are able to analyze the situation, market, customer behavior. अभी मैं आपको आगे जाके कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी जो लेडीज भी बड़ी सक्सेसफुल हैं बट उनके पास कोई डिग्रीज नहीं है। तो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन मासेस में, चाहे हम पेरेंट्स हैं, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री है, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। दिस इज इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। आई एम लिविंग इन स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक कंट्री डिलाइट पोर्टल बनाया ऑनलाइन, एंड दे आर सप्लाइंग गुड क्वालिटी मिल्क। उनके काम करने का तरीका साइंटिफिक है, डिलीवरी टाइम पे है, पेमेंट का पोर्टल अच्छा है, क्वालिटी ऑफ मिल्क इज टू गुड, देयर एडवर्टाइजमेंट, द टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे आर फ्लोटिंग इज आल्सो वेरी गुड। सो ऑल आईआईटीएन पीपल, आप सोच सकते हैं वो तो इंजीनियर है, उनको क्या जरूरत है, लेकिन इट्स अ गुड थिंग, दे आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी अदर पीपल। सो इफ यू आर एन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, you are helping government, you are helping society। और जब आप सोसाइटी में लोगों के साथ जुड़ते हैं और लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ करते हैं, कि what is entrepreneurship? Entrepreneurship is to identify some problem, work with aggregation, you try to add something concrete, you add to give meaning to that. This should be the crux। कहते भी हैं जरूरी नहीं लबों पे हर समय खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं लबों पे, लब होते हैं आपके होंठ, जरूरी नहीं लबों पे हर समय खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का है जब इंसान किसी के काम आए। सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ जॉब, यू आर गिविंग बेनिफिट not only to the individual people but society at large। So next slide, sir। Yes, Ruchi. Now, briefly, I would like to just let you know about the skills every entrepreneur needs। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहती हूँ, हम कई बारी मैनेजमेंट में ये बात पढ़ाते हैं, दो प्रकार की क्वालिटीज होती हैं इंसान में। एक होती है इनेट, which are God gifted, which are because of my hereditary features, my complexion, my general IQ level, my this all say features, my height, and other is acquirable qualities। अगर इंसान लाइफ में कोशिश करे तो जो एक्वायरेबल क्वालिटीज हैं उन्हीं को एक्वायर करके वो सक्सेसफुल हो सकता है। एंड लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। सो लेट अस सी। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। इफ यू वांट टू बिकम a good and successful entrepreneur, skills, behavior, development all are interlinked। So understanding the human behavior, if we talk about the people, if we talk about the personals, if we talk about the employees, customers, they are backbone of every business। So if being an entrepreneur you are good at people, this means
you can scale your business at large. Now, what other sub factors you need to have? You need to have, number one, you should be a good leader, having good motivating skills. लीडर का ये मतलब नहीं होता कि आपने ऑर्डर करना है अपने एम्प्लॉइज को, अपनी मैन पावर को, जो आपकी टीम है. लीडर का मतलब होता है कि आपको वो स्टैंडर्ड सेट करके अपने एम्प्लॉइज को दिखाने हैं. कहते हैं ना, आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए. If you want that your all the employees should be well in time to your organization, first of all, you should try to become punctual. If you want to have a cordial atmosphere in your organization, you should try to build in that. You should have a polite tone, your behavior, your decorum, your body language. That matters. Now the second is empathy. Empathy is you need to treat all your employees equally at par. That is very important. कहते हैं आदमी तब समझदार नहीं होता, तब इंटेलिजेंट नहीं होता जब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे. बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है. आप तब समझदार होते हैं जब आप छोटी छोटी बातों को समझने लगे. दैट इज द मेन क्रक्स, दैट इज द मेन स्किल ऑफ योर लाइफ. और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने साथ बैठे हुए एक छोटे व्यक्ति को भी इंपॉर्टेंट बना देता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स नेटवर्किंग. कई बार आप बिजनेस में कई लोगों से मिलते हैं, उनसे कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं. नेटवर्किंग इज नॉट एक्सचेंजिंग ऑफ द कार्ड्स. Networking is building your consistent relationships. That is more important. To keep in touch with those people, to build the relationship in a consistent manner. Then comes feedback. This is very important. Feedback is that you should know about your product, about your organization, even about yourself. Feedback वो नहीं होता मैं क्या सुनना चाह रही हूँ और मैं वही सुनूं. फीडबैक जेन्युइन होना चाहिए, आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए और आपको फीडबैक को ऑनर करना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड सर. नाउ द पॉइंट नंबर सेकंड इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड हैव स्किल टू मास्टर मनी. You should have a basic knowledge of accounting. Suppose you are having a background of engineering and you are into a venture, then also you should know a little bit of accounting, that the money which is written on the paper is not equal to your cash flow in the bank. And for running a business, you need working capital. So basics of accounting you must know. You should have taxation law knowledge also. What is GST? How to fill ITR? What is TDS, tax deducted at source? You should have knowledge. And if you think that your things are getting more complicated, you should hire the services of expert. So that is more important. Next slide. And one thing more, whatever money you have, don't spend more money what you are having. You need to be very frugal about that. Then comes be a learner lifelong. आप किसी को भी सुने, इंदिरा नुई जो पहले पेप्सी कोला में थी, अब अमेज़न के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है. इंदिरा नुई ने भी एक बार कहा था कि सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो अपने आप को थ्रू आउट लाइफ स्टूडेंट समझते हैं, लर्नर समझते हैं, वही सीख पाते हैं. उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. सबसे पहले क्यूरियोसिटी होने के साथ साथ उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदल सके. अब मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है या बिजनेसमैन है, वो कहते हैं मैं तो कंप्यूटर नहीं चलाऊंगा, मैं तो गूगल पे से किसी को पैसा नहीं भेजूंगा. अब टाइम बदला, कोविड आया, डिजिटल इरा शुरू हुआ. हाउ कैन यू मेक योरसेल्फ aloof? How can you dictate life as per your own conditions and choices? You need to be to have a good flexibility. Even a teacher like us of my age group, I'm 55 plus. I became computer friendly and techno savvy only during this period of COVID. Because you need to have classes on a e-learning platform, either a Zoom or a WebEx or a Google Meet. So you have no other option. If you're having no other option, you should
Try to cultivate flexibility in your own temperament, in your own working, and try to have open-mindedness. That is very important. Next. Now, the fourth point is holistic approach to become successful entrepreneur. First point, very important, entrepreneur should have a knowledge about the whole venture, what he is floating. Entrepreneurship is 24-hour job, 7 days. Hard work is key to success. It's fine, but smart work is also very important. So a very good blend, a very good combination of hard work and smart work. Faith in oneself. अगर आपको अपने अंदर फेथ नहीं है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप फ्लरिश नहीं कर सकते. और अगर आप में खुद के अंदर बिलीफ को लेकर कमी है, तो आप इसको ओवरकम करने की कोशिश करिए. नेक्स्ट स्लाइड सर. कैपेसिटी टू टेक रैशनल एंड कैलकुलेटेड रिस्क. कई बार हम पढ़ाते हैं ना, मैनेजमेंट में, क्लास में भी बहुत बार पढ़ाते हैं कि रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना. लेकिन एक एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, रैशनल रिस्क लेगा, अननेसेसरी गलत टाइप का रिस्क नहीं लेगा. ही शुड बी अपॉर्चुनिटी सीकर. उसको अवसर तलाश करने चाहिए. 3 सीज होते हैं लाइफ के. अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, नए नए ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करो. ये लाइफ है. जो इसको सही समय पे एक्सप्लोर करता है और ग्रैब करता है, वही फाइनली विन करता है. देन कम्स मैनेजरियल स्किल्स. Managerial skills are basically of 5 types. You should know how to plan. You should know how to organize. You should know how to recruit the people, right person on the right job. You should know how to direct, which is a combination of leadership, motivation, and communication skills. Communication skills are also very important in life, in every sphere, whether personal or professional. And lastly, how to control the whole situation. How to do the corrective actions. And entrepreneur must know how to coexist with the stakeholders. एक्चुअली ये लिस्ट बहुत वाइड और भी एग्जॉस्टिव हो सकती है, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें मैं बताना चाह रही थी वो मैंने इसके अंदर रखी. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide is nothing but this is the repetition of the previous ones, so we can skip and we can concentrate more on the case studies, more on the profiles of entrepreneurs, so that students get motivated about the entrepreneurship. Next slide, sir. Yeah. Now let us talk about one by one. ऐसे there is a long list of entrepreneurs. अगर मैं लिस्ट निकालने आपके साथ बैठूं तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने उसके अंदर केवल वही लोग लिए हैं. इसमें कुछ लोग हैं जिनकी मैं आपको बहुत तफसील से, बहुत डिटेल से उनके बारे में बताना चाहती हूँ, उनके ये लाइफ के बारे में, बेसिकली अबाउट द वुमेन. क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम वुमेन का रोल एंटरप्रेन्योरशिप में देखें तो नो डाउट इट गिव्स अ वेरी रोजी एंड गुड पिक्चर ऑन पेपर्स. नाम है आपके किरण मजूमदार हैं, आपकी फाल्गुनी नायर हैं, फिर आपकी कमानी टायर्स एंड ट्यूब्स की जो चेयरपर्सन हैं. तो बहुत सारे लोग हैं इंडियन वुमेन में, लेकिन फिर भी स्टिल इंडिया अभी भी एक्सप्लोर करना चाहिए गवर्नमेंट को भी और पेरेंट्स को भी अपना माइंडसेट चेंज करके, इवन वुमेन को भी एंटरप्रेन्योर की फील्ड में अगर वुमेन आगे आएगी तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी वुमेन की और कंट्रीब्यूट भी कर पाएगी वो नेशनल ग्रोथ के अंदर. आपको सुन के हैरानी होगी जब हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप्स देखते हैं तो इंडिया इन द लास्ट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, India was at the position of 140 among 153 countries. Such kind of disparities there in India in male and female. And in the second last report, we were at the position of 112. So 28 positions India was towards a declining trend. And that particular global gender index gap has got 4 basic pillars about the women health and hygiene, then education, then economic participation, and then political empowerment.
तो जब हम सोसाइटी में 5-6 वुमेन की बात करते हैं या 10-15 वुमेन की बात करते हैं, that does not represent the whole masses of Indian women. क्योंकि इंडियन वुमेन की अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, गरीब है, दलित है, अनअवेयर है, अनएजुकेटेड है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेल डोमिनेशन है इंडिया के अंदर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म पे अगर इंजीनियरिंग करती हुई कुछ फीमेल्स बैठी हैं, आई थिंक दे शुड ट्राई टू change their outlook towards life, and instead of preferring for the job and you are having, if suppose, good qualities to become a good entrepreneur, I think you should opt for this, because then you can do at large the societal help. Now he's Bini and Sachin Bansal. मैं सबको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, लेकिन कुछ एक स्टडीज हैं जो मैं आपको जरूर बहुत अच्छे से बताऊंगी एंटरप्रेन्योर्स की। इनकी ऑनलाइन शॉपिंग है सचिन बंसल, और इनकी ये ई कॉमर्स में डील करते हैं, फ्लिपकार्ट, किसी से नाम छुपा नहीं है। दिस इज अ वेरी फेमस प्लेटफॉर्म। आपको मालूम है 1994 में ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म सबसे पहले लॉन्च हुआ था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ई कॉमर्स इतना ज्यादा मार्केट में धमाका कर देगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन के करोड़ों में पैसा कमा लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड pertains to Biocon, Kiran Majumdar. Next slide, sir. Kiran Majumdar. She is a leading entrepreneur. ये ऐसी शख्सियत है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। She is a wonderful lady. And in 2019, she was rated as 54th richest person of India. 54th richest person in India in 2019, she was rated. ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है और एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर है। जब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को कई बार मैं देखती हूँ, जैसे फाल्गुनी नायर की जब मैं आपसे बात करूंगी जो 50 साल की हैं, तो कई बार मन में आता है, कहते हैं ना कि रख दो जिंदगी के पन्ने बारिश में कि धुल जाए स्याही, जिंदगी फिर से लिखने को मन करता है कभी कभी। तो ऐसे लोगों को देख के यू गेट मोटिवेटेड। तो स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि अच्छी अच्छी केस स्टडीज पढ़ा करें, सुना करें, देखा करें, क्योंकि किसी भी लर्निंग के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला पिलर होता है बहुत ज्यादा पढ़ना, दूसरा होता है बहुत ज्यादा देखना, और तीसरा होता है बहुत ज्यादा सुनना। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। ही इज अ लीडिंग एंटरप्रेन्योर कॉल्ड राहुल यादव। ये जो राहुल यादव जी हैं, इन्होंने सबसे पहले हाउसिंग का प्लेटफॉर्म बनाया। देखिए क्रिएटिव आइडिया कितना अच्छा था। आपको मालूम है इंडिया में बहुत लोग बाहर सेटल्ड हैं, यूरोपियन कंट्रीज में सेटल्ड हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिया में, और कई बार प्रॉपर्टी के रेट्स भी उनको नहीं पता चलते हैं। तो राहुल यादव ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें 6000 ब्रोकर्स इनके साथ जुड़े, जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी के रेट्स, एप्स हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और बड़ा अच्छा इनका रोरिंग बिजनेस था। इन्होंने ऐसी फील्ड चुनी जहां पर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, एंड ही हैड क्रिएटेड वंडर्स। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड और आइडिया होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, स्विगी, यू नो, जो स्विगी है फूड डिलीवरी करता है, ऑनलाइन ग्रोसरी है, कोरियर है। मैंने खुद भी स्विगी से कई बारी फूड ऑर्डर किया है। बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, टाइमली है। और ये जो स्विगी है इसके अंदर मेजिटी है, रेड्डी है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज श्रद्धा शर्मा। श्रद्धा शर्मा जी ने अपना, नेक्स्ट स्लाइड। श्रद्धा शर्मा ने एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया लिया। जो श्रद्धा शर्मा थी, ये पहले असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थी CNBC के साथ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर भी रही, एडवाइजर भी रही, सॉरी, ब्रांड एडवाइजर रही टाइम्स ऑफ इंडिया की। इन्होंने एक क्रक्स को पकड़ा कि हर आदमी के जीवन की कुछ कहानी होती है, सम स्टोरीज देयर। तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बनाया, एंड आई थिंक nowadays she is a very successful entrepreneur. Now the next slide. कल्पना सरोज। कल्पना सरोज के बारे में मैं थोड़ा तफसील से बताऊंगी, क्योंकि कई बार होता है ऐसे लोगों की जिंदगी को देखना, समझना, सुनना और आत्मसात करना बहुत जरूरी होता है। उनको क्रेडिट देना भी जरूरी होता है, और मन से, दिल से उनको शाबाशी देना भी जरूरी होता है। कहते भी हैं कि जो मुस्कुरा रहा है, कल्पना सरोज जी की चेहरा देखिए, कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है
उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता यारो। बिना संघर्ष के, बिना कंपटीशन के, बिना किसी विरोधाभास के कोई चमक नहीं सकता यारो। जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में तो उजाला होगा। अब बात करते हैं कल्पना सरोज की। ये महाराष्ट्र में पैदा हुई एक बहुत गरीब घर में, एक दलित परिवार में पैदा हुई। 7वीं क्लास तक पढ़ी और इनके फादर ने इनकी शादी कर दी। शादी भी इनसे डबल उम्र के आदमी से हुई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिंदुस्तान में अभी भी हम कुछ एक चुनिंदा वुमेन को देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि वुमेन का उद्धार है, वुमेन मेन के बराबर खड़ी है। स्टिल देयर आर सो मेनी इश्यूज विच आर स्टिल एग्जिस्टिंग इन अवर सोसाइटी। और इंडिया ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप में ईयर दर ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के हिसाब से पीछे पायदान में नीचे चला गया है। जैसे 140वीं पोजीशन पे है 153 कंट्रीज। अ वेरी बैड सिनेरियो। इनकी शादी कर दी। इनके फादर जब मुंबई इनको शादी के बाद मिलने गए तो उन्होंने पाया इनके ससुराल वाले और हस्बैंड का एटीट्यूड कल्पना के साथ अच्छा नहीं था। इन्होंने अपनी बेटी को लिया और महाराष्ट्र अपने गांव में वापस आ गए। आपको मालूम है इंडिया में जब एक लड़की विडो हो जाती है, जब अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, हस्बैंड उसको छोड़ देता है, तो एक बहुत बड़ा टैबू उसके ऊपर लगता है और समाज उसको जीने नहीं देता। पर कल्पना ने अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने उसके बाद सोचा कि मेरे पास ना तो फॉर्मल डिग्री है, ना मेरे पास पैसा है। उन्होंने अपने फादर को रिक्वेस्ट की कि मुझे मुंबई मेरे चाचा के घर भेज दो। जब ये अपने चाचा के घर आई, वहां से इनकी यात्रा शुरू हुई। इन्होंने 16 साल की उम्र में सिलाई कढ़ाई का एक आउटलेट ज्वाइन किया, जहां पे इनको धागा काटने का काम मिला था। उसके बाद धीरे धीरे इनका नाम होने लगा। इन्होंने सोचा कि मैं बैंक से लोन ले लूं। 50,000 रुपया लोन मिलता था बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि उसमें 15,000 रुपए की रिश्वत सरकारी मुलाजिम को देनी पड़ेगी। तो कल्पना सरोज ने उसके बाद एक संगठन बनाया जिसमें उसने इस अवेयरनेस को वुमेन के अंदर डेवलप किया कि वो बैंक से बिना रिश्वत दिए किस प्रकार से लोन ले सकती है। देखिए, इसको बोलते हैं मानवता की जर्नी में पार्टिसिपेट करना। फर्क इस बात से नहीं पड़ता आप कितने खुश हैं। अपने को खुश रखने के लिए तो हम बहुत काम करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे से जुड़े हुए लोग मुझसे कितने खुश हैं। मैंने इस दुनिया में आके क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या पाया, क्या मैंने किसी की मदद की, क्या मैंने ईमानदारी से अपना जीवन यापन किया, क्या ऊपर वाले ने जो मुझे पोटेंशियल दिया था उसको मैंने पूरा एक्सप्लॉइट किया। अब क्या हुआ, इसके बाद जो कल्पना जी थी, इनके पास कमानी टायर ट्यूब्स के एक बारी वर्कर्स आए, क्योंकि वर्कर्स, ये पीछे की कहानी थोड़ी लंबी है। 115 करोड़ का कर्जा था कमानी टायर ट्यूब्स पे। तो कल्पना ने अपनी सूझबूझ से 1 साल के अंदर इस डेट को वापस किया। इसकी चेयरपर्सन बनी, ओनर बनी, और ये ऐसी वुमेन है जिन्हें पद्मश्री मिला। इन्हें क्या मिला? पद्मश्री मिला। इनके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, फॉर्मल बेसिक क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं है। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स फोकस करेंगे, दिमाग में बिठाएंगे इस बात को। फॉर्मल डिग्री तो नहीं है, लेकिन एक कंपोनेंट बहुत जबरदस्त है, दैट इज बिलीफ इन वन सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है। तो ये है कल्पना सरोज का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इस समय भारत के मैप पर इनका बहुत बड़ा नाम है और ये वुमेन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। सर नेक्स्ट केस स्टडी भी आपको समझनी चाहिए, जो कोलैबोरेटिव एफर्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है। कहते हैं ना, इफ अगर आपको लंबा चलना है, इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर, लोगों के साथ मिलकर चलिए। लिज्जत पापड़ के अंदर आपको मालूम है, जो गुजराती होते हैं हिंदुस्तान में, जो सिंधी कम्युनिटी होती है, जो मारवाड़ी होती है, उनका शुरू से ही बहुत बिजनेस ओरिएंटेड माइंड होता है। एक गुजराती बहन थी जसवंती बे, वो और 7 औरतों ने मिलकर मुंबई के एक चौल के बिल्डिंग की छत पे बैठकर पापड़ बनाने शुरू किए।
औरतें पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको पैसे का महत्व पता था कि पैसा कमाना है। और पैसा किस चीज से उन्होंने कमाया? अपनी स्किल से, क्योंकि उन्हें पापड़ बनाना आता था। धीरे धीरे उन्होंने इस कोलैबोरेटिव एफर्ट को बढ़ाया और आज पूरे इंडिया में आप देख लीजिए, लिज्जत पापड़ को हर व्यक्ति जानता है, हर रसोई में मोस्टली पापड़ होता है। 1959 में ये बने थे। कोई एजुकेशन नहीं थी, सब अनपढ़ महिलाएं थी, लेकिन इनके अंदर क्या था? मिलकर चलने का जज्बा था, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा था। तो इस फील्ड के अंदर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड परटेन्स टू अजहर इकबाल। अजहर इकबाल ने एक क्रिएटिव आइडिया बनाया। कई लोग होते हैं ना, जैसे कई आप देखिए, कई बिजनेसमैन होते हैं, कईयों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, वो कहते हैं हमें अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है, हम अखबार नहीं पढ़ सकते, हमने लगा भी लिया तो 20 पन्ने का अखबार कौन पढ़ेगा जिसमें 10 पेजेस पे तो एडवर्टाइजमेंट है। तो अजहर इकबाल ने एक क्रिएटिव आइडिया बनाया। उसने ऐसे लोगों के लिए ऐप बनाई जिनके पास समय नहीं है, लेकिन वो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के साथ राब्ता कायम करना चाहते हैं। और इसने हाईएस्ट रेटेड न्यूज ऐप बनाई इन शॉर्ट्स के नाम से, जिसमें कम समय में एक व्यक्ति अपडेटेड हो सकता है, बहुत शॉर्ट में वो पढ़ सकता है और अपडेटेड हो सकता है। देखिए, यंग सा बच्चा है और इसने इस फील्ड में आज बहुत पैसा कमाया है। और इसमें जो जितने भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी न्यूज होती है, मे बी रिलेटेड टू policy of the governments, may be related to some international issues, may be related with business, sports, technology, बहुत छोटे लिमिटेड शब्दों में ये ऐप उसको दिखाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जो बहुत इंस्पायरिंग केस स्टडी है। सो नेक्स्ट स्लाइड, दैट परटेन्स टू फाल्गुनी नायर। कई बार होता है ना, हमें दूसरे के अनुभव से चीजों को सीखना चाहिए। दो चीजें होती हैं सीखने के लिए, एक होता है मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूं और सीखूं, लेकिन जिंदगी इतनी छोटी है, हर इंसान पूरी जिंदगी खुद एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता। कुछ हमें दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। फाल्गुनी नायर is a very famous name who founded नायका। नायका ऑनलाइन पोर्टल है, किसका? ब्यूटी का पोर्टल है, और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और लेकिन फाल्गुनी नायर के बारे में एक बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। IIM से पढ़ी हुई है एंड शी वाज कोटक महिंद्रा बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। देखिए, इतनी हाईएस्ट पोजीशन पे थी, बहुत अच्छी सैलरी ले रही थी, पर वन डे शी टोल्ड हर बॉस कि मैं अब और जॉब नहीं करना चाहती, मैं अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, एक चांस देना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा कि सर मैं आपके साथ भी compete नहीं करूंगी। Obviously her main experience was related with the Kotak Mahindra Bank, but she promised her senior कि मैं आपके business को compete नहीं करूंगी, because I am very much passionate doing something on internet and beauty। और उन्होंने जॉब छोड़ी, इंटरनेट और ब्यूटी पे नायका नामक ब्रांड बनाया। 40,000 ब्रांड्स इनके ऑनलाइन शॉपिंग में है और 97% इनकी सेल ऑनलाइन है। 97% सेल इनकी ऑनलाइन है और इनको वुमेन अहेड अवार्ड से नवाजा गया। एंड शी herself is a very great role model for all the women of India, and hats off to her. Within a very short span of time, her creative bent of mind, her good innovative idea of online shopping portal of 40,000 brands clicked in a very beautiful manner, not only in India but internationally. So we need to get educated from these kind of people. तो आपके हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया आता है, तो जो भी आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में, एक उसको डायरी पे लिखते जाइए, फिर उसके बारे में मार्केट रिसर्च करिए। जैसे कल एक फाल्गुनी नायर की को जब मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही थी आपके लेक्चर के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा ये भी भार था, डॉक्टर चक्रवर्ती ने मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे जब आपके लिए बुलाया, तो मुझे लगा मेरा लेक्चर होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को कुछ काम दे। तो फाल्गुनी नायर को पढ़ते हुए मैंने जब देखा कि 50 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 50 शी स्टार्टेड
her venture of entrepreneurship. तो यहाँ से पता चलता है सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, सक्सेसफुल होने की कोई उम्र नहीं होती, प्रोवाइडेड आपके भीतर जज्बा होना चाहिए कुछ बनने का, आप में हार्डवर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए। तो जो लोग अपने पसीने की स्याही से अपने मुकद्दर को लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने हमेशा भरे रहते हैं, कभी ब्लैंक नहीं होते। तो सीखने की जरूरत है हमें फाल्गुनी नायर से। तो कल मैंने भी एक वेंचर ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा सोचा। अब मैं 3-4 लोगों से डिस्कस करने के बाद आई एम बेंट अपॉन कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन वेरी गुड ऑनलाइन वेंचर related with education to give even jobs to the people around. Next comes Tilak Mehta. Next slide, sir. तिलक मेहता के बारे में मैं आपको बता दूं, कई बार कहते हैं ना मेच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तिलक मेहता, तिलक मेहता जो है ये इसको ही वाज अवॉर्डेड एज अ ग्लोबल चाइल्ड। सर नेक्स्ट स्लाइड। एक्सक्यूज मी sir, next slide. Yes, I have done. I have given, madam. I have given. It's not showing now. Okay, ma'am. Please wait. Okay, sir. I can then proceed further. Okay. Now तिलक मेहता ये 15 साल का यंग एंटरप्रेन्योर है इंडिया का। पेपर्स एंड पार्सल्स नामक इसने एक बनाया पोर्टल और ही वाज अवॉर्डेड एज अ ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड इन 2020। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कोई एज नहीं है, 14 साल, 17 साल, 50 साल, 45 साल, क्योंकि मैंने बताया एज इज नो बार। ये हमारे दिमाग में वैसे ही चीजें होती हैं, अदरवाइज देयर इज नो बार ऑफ एज। अगर आपका ड्रीम है आप उसको किसी भी उम्र में फुलफिल कर सकते हैं। So this is all about the case studies of so many people. Now let us talk about the women entrepreneurship, जो मैंने आपको पहले भी बताया। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि इंडिया में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं। क्योंकि जैसे सबसे पहली तो प्रॉब्लम है, सर नेक्स्ट स्लाइड, वुमेन के केस में देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन। उसको अभी प्रेरणा नहीं मिल पाती, ना घर से ना बाहर से, because there is a lack of motivation, so she always suffers with lack of confidence। और जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो आप सक्षम होते हुए भी, आप काबिल होते हुए भी, आप वर्सटाइल होते हुए भी कामों को नहीं कर पाते। एक औरत को फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलती, फैमिली से भी नहीं मिलती, हस्बैंड से भी नहीं मिलती। दैट इज ऑल्सो वन वेरी मेजर ड्रॉबैक इन केस ऑफ इंडियन वुमेन हु वांट्स टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको हिंदी में लिंग भेद बोलते हैं, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप बोलते हैं, लॉट ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, एंड दिस फिनोमिना इज ग्लोबली सीन। कई बार हमें लगता है कि यूएसए की वुमेन बहुत सुखी है, ऐसा नहीं है। ग्लोबली माना जाता है इन अ लाइफ 1 out of 3 women always face violence, abuse from men and harassment। आप ने अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया या आपने कोई नए आइडिया से कुछ शुरू किया, जनरली वुमेन फील्स दैट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ हरासमेंट फ्रॉम द मेल साइड। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एक वुमेन फेस करती है, जिसकी वजह से ज्यादा वुमेन जो पढ़ी लिखी होती हैं, दे ऑप्ट फॉर अ जॉब but they don't opt for entrepreneurship, irrespective of having a very creative bent of mind and a good ideas they are having। Then comes the importance of women in leadership। जो importance है women की leadership में, women में सबसे अच्छी बात यह है कि women में empathetic ज्यादा होती है, emotional ज्यादा होती है, और women multitasking कर सकती है। तो वुमेन को अपने जो कोर स्किल्स है उनको पहचानना चाहिए कि आई एम वेरी इमोशनल, आई एम वेरी एम्पैथेटिक, आई एम वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, आई एम वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम इमोशनल, आई नो हाउ टू हैंडल द क्राइसिस। तो अब किसी भी चीज के कंपटीशन को फेस करने से पहले, इफ यू नो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ and what are the points of our weakness, then it is very important that we can work on that।
तो इंडिया में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर कॉलेजेस में, बिजनेस स्कूल्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर लीडिंग केस स्टडीज इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई जाए तो मुझे लगता है दैट कैन क्रिएट वंडर्स. वन मोर थिंग, as far as education system of India is concerned, it is still an obsolete system. It needs to be changed. New Education Policy 2020 has given a lot of emphasis on the versatile development of the student. And the tomorrow's time and field of education is going to be very, very difficult, not only for students, but also for the teachers. Survival for the fittest. We know this, survival for the fittest. If you're fit, if you know your subject, if you're a techno savvy, if you can know how to compete in this world, then only you are going to survive. So similarly, if you're having an education, suppose you're having a BTech degree or you're having a MBA degree, that you should try to opt for entrepreneurship rather than for the job side, because in India, day by day, the problem of unemployment is on the increasing side. So this is all about the entrepreneurship. My main focus was that I tried to cover in a very brief but in a very effective manner about what is entrepreneurship, what skills do you have, and with a very good and existing examples of some leading entrepreneurs so that you can get motivated. So the main purpose of any talk, the main purpose of any subject, the main purpose of understanding the concept lies that if few people get motivated and the spark is generated, then the speaker should have this kind of satisfaction that whatever intellectual discourse he or she has shared has got some meaning. So still after this, I would like to add one thing. Whatever degree you have, whatever money you have, whatever profession you have, but we all should try to become, I think, last but not the least, good human beings. We should be loving, we should be caring, we should have compassionate, we should know how to contribute to India. And one good thing for entrepreneurship is that India is having a very good rank in ease of doing business. मोदी जी ने इकोनॉमी को ओपन किया, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के लोग यहाँ आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, लोग यहाँ पे अपने बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस भी खोल रहे हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर देयर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. बिजनेस करना आसान है. इसका भी एक इंडेक्स होता है, जैसे कई सारे इंडेक्सेस होते हैं ना, ग्लोबली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप होता है, करप्शन इंडेक्स होता है. करप्शन इंडेक्स में इंडिया की स्थिति खराब है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया इज ऑन अ गुड पोजीशन. इंडिया ऐसी कंट्रीज में आता है जहां पे बिजनेस करने में ईज है. गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशंस देती है, गवर्नमेंट आपको एक फ्री हैंड देती है कि आप आइए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बाहर की जो करेंसी है वो इंडिया में आनी चाहिए, और बाहर के लोगों के जरिए इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज जॉब की या बाकी चीजों की मिलनी चाहिए. तो जब बाहर से लोग इंडिया में आते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिया के पास और है. इंडिया में जो एजुकेशन है वो सस्ती है, तो यहाँ लोग पढ़ लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राइस का भी मिलता है. इंडिया में जो प्राइसिंग है वो अक्रॉस अ ग्लोब कम है, तो इंडिया में कई एडवांटेज हैं जिसकी वजह से फॉरेनर्स, बाहर की कंट्रीज इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बिजनेस करने में नहीं है. तो विद दिस वर्ड आई थिंक whatever I prepared, I've discussed with you, and I would like to place on record that I'm extremely thankful to Dr. Chakravarti, who approached me for your this today's lecture, and I really enjoyed giving you. So I would like to अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटा सा कपलेट आपको सुनाऊंगी. कहते हैं, अगर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास. इसका मतलब जुनून होना बहुत जरूरी है. दुनिया बदली है जिसने भी, दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला.
अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। इसका मतलब ड्रीम्स आपने खुद बुनने हैं और आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू सम अप, डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ भी करिए, ट्राई टू बिकम गुड ह्यूमन बीइंग्स, try to become more responsible towards your parents, toward your teachers, towards society, towards nation at large। इन्हीं शब्दों के साथ कॉलेज का बहुत बहुत थैंक्स मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई होप आपने जरूर एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। Thank you, madam. Thank you. Very nice presentations and very informative one. Thank you, madam. And a question to the, anybody have any questions? Any query? There are lots of messages are coming. They are giving Okay, thanks sir, to you, madam. अच्छे मैसेजेस पढ़ दीजिए सर। मैं Everybody, स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहूंगी, मेरा एक हिंदी का अपना पोएट्री चैनल है। आई एम हैविंग अ वेरी वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सनालिटी। आई एम अ yeah, पर्सन ऑफ कॉमर्स, आई एम वेरी गुड इन नंबर्स, आई एम वेरी गुड इन पोएट्री। और आई होप आपने एंजॉय करा होगा, बिकॉज जनरली पीपल से दैट आई एम अ वेरी गुड ओरेटर, बिकॉज जनरली आई स्पीक ऑन वुमेन इश्यूज मोर। yeah, they are giving the thank you, lots of thank yous for you, madam. And Okay. also one is the Siddharth Dutt. He's mentioned that one your words is very much motivating, ma'am. थैंक यू सर। बल्कि सर आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो कुछ बोले। हाँ, definitely. उनको बोलिए, वो मैसेज के बाद बोले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। If anybody want to ask any question to ma'am, please ask. If anybody have any query. चलिए सर, मैसेजेस पढ़ दीजिए कुछ अच्छे से, दो चार। Ma'am, good evening. हाँ, वेरी गुड इवनिंग बेटा। व्हाट इज योर नेम? My name is Ma'am Ujjwal. ओके उज्जवल, बताइए। Ma'am, your words are really very motivating, and your poetry tone is so much means like relate ourselves with the words. So Thank can you you. please tell the poetry? You have mentioned you have some what? Yeah, channel? my poetry channel name is Spandan Archana Bhatia. I have shared with Dr. Chakravarti. Spandan Dr. Archana Bhatia. तो उसको देखिए। मेरा एक स्टैटिस्टिक्स का भी चैनल है बेटा, अर्चना भाटिया एजुकेशन के नाम से, बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो मेरा उस पे काफी सारी वीडियो स्टैटिस्टिक्स की भी हैं। और मैं उन लोगों में से हूँ जो बिलीव करते हैं कि डेली अपनी जिंदगी की स्लेट पर कुछ लिखना चाहिए। मैंने अपने प्रोफेशन को भी बेटा बहुत ईमानदारी से जिया है। मैंने अपने बच्चों में और कॉलेज के स्टूडेंट्स में कभी फर्क नहीं किया, नेवर। एंड आई एम अ वेरी पॉपुलर टीचर इन फरीदाबाद। Yes, ma'am. Thank you. सो वॉट एवर यू डू इन लाइफ डियर स्टूडेंट्स, पैशन के साथ कीजिए और वही काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। मेन चीज है कि आपको कौन सा काम अच्छा लगता है। अभी मैं एक केस स्टडी आपको बताना भूल गई। एक दिल्ली में एक बहुत यंग लड़का है, उसने सात्विक भोजन के नाम से एक चेन शुरू की है, बिना प्याज और लहसुन के खाना। देखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना सच में मुश्किल नहीं है। माइंडसेट होना चाहिए, कोई अच्छा आइडिया होना चाहिए और आप में काम करने की लगन होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी स्ट्रीमलाइन नहीं है चीजें। तो आप इंजीनियरिंग, मैंने आपको एग्जांपल बताया, आईआईटीएंस हैं जो उन्होंने कंट्री डिलाइट खोला हुआ है फरीदाबाद में। इतने अच्छे दूध की क्वालिटी है, मैं आपको बता नहीं सकती। टाइम पे डिलीवरी है, क्वालिटी अच्छी है, और वो 3-4 बच्चे हैं और बहुत अच्छा अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा? उज्जवल, आप और कुछ कहना चाहेंगे बेटा? No, ma'am. Thank you. Okay, I think you liked my lecture. Yeah, definitely. Okay. Madam, somebody has written in chat box also that it's great presentation and Shairi are also fantastic. Thank you, sir. Thank you so much. This is also coming from ma'am student. This is name is Syed Maruf Hossain. Maruf Hossain. सर, ये आज मेरा कम से कम नहीं था एज ए कीनोट टॉक, मेरा 100 पार हो गया होगा। मैंने आपको बताया ना, ज्यादातर तो मैं वुमेन इश्यूज के ऊपर बोलती हूँ या फिर स्टैटिस्टिक्स में लेक्चर देती हूँ। Yes, ma'am. तो बाकी ये है Ma'am, कि अगर yes, ma'am, our program also coming in at the workshop
You all you must know. Okay, na? We are waiting for that also. बिल्कुल सर. Yes, ma'am. पढ़ दीजिए सर थोड़े से मैसेजेस. वही है, तक है मैम, उसके बाद अभी कुछ आया नहीं, लिखा नहीं. अच्छा. कोई भी आपके कोई टीचर्स ने कुछ मेरे को डिस्कस करना हो, कुछ बोलना हो, आपके Yes, टीचर्स ma'am, भी yes, तो ma'am. हैं लाइन पे. yes. Yes, ma'am. Some students also written that thank you, ma'am. You are good learning and understanding and motivating. Thank you so much, ma'am. It is from Thank you, Bila. sir. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, ma'am. Okay, sir. Anybody? Can we wind up? Yes. Okay. Okay. Thank you, madam. I would like to thank you, our chief guest and our today's speaker, madam, Dr. Archana Bhatia, madam. Thank you, madam, for your inspirational and informative speech, specifically. And madam, I think madam specifically show us the very tough term, basically, but a very interesting one. The term is entrepreneur, but madam explain us in a very simple way, very interesting way. Thank you, madam, for that one. And one thing I can summarize from the madam's speech, that madam give the idea that if anybody have the self-confidence, then anybody can success in life. Yeah. But definitely the hard work is the important, but smart work is much more important. Combination of both is important, sir. Important. Okay. So success can be achieved also without any formal degree. Definitely degree can give us the extra benefit, but it doesn't mean that for an entrepreneurship it's required. That doesn't record basically. So thank you, madam, to show us the pictorial view of a successful entrepreneur, basically. So I think our students, each and every member or the participants enjoys your lecture. Thank you for your giving such kind of pleasant and the motivational speech. And finally, I would like to thank our beloved principal, madam, IIC convener, madam, and all IIC member and the volunteer for thank you, and also the beloved students and participants. Thank you, sir. In future also, any kind of my help, Yeah, on I'll behalf be there. yeah, definitely, ma'am. Thank you it's our pleasure, ma'am. On behalf of Greater Kolkata College of Engineering and Management, we are just giving a soft memento. Sir, can you please share? सर अभी आपके एक स्टूडेंट ने लिखा है लक आल्सो मैटर्स इन लाइफ. Yes, ma'am. तो उसमें मैं स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ, बेटा एक बारी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से कहा कि गुरुजी अगर किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है तो फिर काम क्यों करना. तो चाणक्य ने कहा हो सकता है किस्मत में लिखा हो कि हार्ड वर्क से ही मिलेगा, मेहनत से ही मिलेगा. तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जब आप मेहनत करते हैं ना तो अपने आप आपकी लक भी बदल जाती है. तो कभी भी प्रयास आपको नहीं छोड़ना चाहिए, और आपको गीता भी एक बार पढ़नी चाहिए. आपको निष्काम भाव से काम करना चाहिए. ऑलवेज डिटैच फल फ्रॉम कर्मा. These days, sir, I am reading Gita also to make students enlightened about our holy book. Hanji, sir. So, madam, on behalf of the Greater Kolkata College of Engineering and Management, please accept a soft memento from our side. Okay, sir. Thank you so much. It's a digital memento. Please Yeah. accept this. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you. It's my pleasure. Thank you, madam. Okay, It's sir. also Thank you pleasure so much, your- madam. Thank you so much Thank for you so giving us much. time and for your valuable speech. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Looking forward for me Definitely. other functions also. Definitely, ma'am. Definitely. Definitely, ma'am. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, then we are ending our program today. Yeah, here. sir. Definitely, sir. Okay, ma'am. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Message to the students and the participants. Feedback form is already given to the message box or chat box. You just click on the link and complete your feedback. Thank you and good night for today. Okay. Thank you, madam. Okay, sir. Bye-bye. Goodbye.